Hello students and welcome to my YouTube channel Learn with Nisha ji. Today we are going to discuss all the exercises of chapter number 3 for class 9 science. So please watch the video till last. You can subscribe my channel to get regular updates regarding all the video uploads and complete your course. So let's begin with the first question. See what the first question says. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 grams of boron and 0.144 grams of oxygen. ठीक है, हमारे पास एक सैंपल है जिसमें ऑक्सीजन एंड बोरॉन है. ओके, टोटल 0.25 ग्राम्स है और उसमें सेपरेटली हमने देखा इतने ग्राम्स बोरॉन है और इतने ग्राम्स ऑक्सीजन है. ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें बोरॉन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है सपोज. ओके, सो परसेंटेज ऑफ बोरॉन विल बी इक्वल टू mass of boron divided by the total mass into 100. ठीक है, तो mass of boron कितना था 0.096 और total mass कितना था 0.24 into 100. We get it as 40%. ठीक है, similarly percentage of oxygen क्या होगा, the mass of oxygen by total mass into 100. So mass of oxygen कितना given था 0.144 divided by total mass was 0.24 grams into 100. We get it as 60%. ठीक है, तो फाइनली बोरॉन 40% है और ऑक्सीजन 60% है. टोटल आप कर सकते हो, इट्स 100%. राइट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. ओके, अगर आप इनको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हो एंड यू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली तो आपको काफी मींस क्वेश्चंस की सॉल्विंग के लिए काफी टेक्निक्स डेवलप हो जाएंगी. राइट, so second question is, when 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen, then 11 grams of carbon dioxide is produced. Okay, so what mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen? So this is a kind of a riddle. Okay, जैसे आप 3 ग्राम्स कार्बन ले रहे हो और 8 ग्राम्स ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है 11 ग्राम्स. राइट, अब आप कार्बन को सेम रहने देते हो, 3 ग्राम्स ही लेते हो कार्बन बट ऑक्सीजन को 50 ग्राम्स कर देते हो, तो दे आर आस्किंग कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म होगी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लगाएंगे हम यहाँ पे. So 3 grams of carbon is burnt in excess oxygen. So the total mass of reactants should be equal to the total mass of the products. Okay. So with 50 grams of oxygen, which is in excess, okay, the mass of carbon dioxide formed will still be 11 grams only. Okay. This is by the law of conservation of mass, which states that matter can neither be created nor destroyed. ओके, जैसे आप इनिशियली देखो 3 ग्राम्स प्लस 8 ग्राम्स, दिस वाज द रिएक्टेंट्स. 3 प्लस 8 इज 11 और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ 11 ग्राम्स. ऑलराइट, नाउ अब आप क्या कर रहे हो, 3 ग्राम्स कार्बन और 50 ग्राम्स ऑक्सीजन, तो जो कैपेसिटी है उसी हिसाब से तो कार्बन रिएक्ट कर पाएगा इसके साथ, तो इसमें से सिर्फ हमारा 8 ग्राम्स ही कंबाइन करेगा 3 ग्राम्स के साथ और जो बाकी हमारा 40 मींस 42 ग्राम्स रिमेनिंग ऑक्सीजन है दैट विल रिमेन एज इट इज. राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर polyatomic ions, give examples. So polyatomic ions are the ions that consist of 2 or more atoms covalently bonded together carrying a net charge. Examples are sulfate ion SO42 minus, nitrate ion NO3 minus, ammonium ion NH4 plus. So next kind of question is you have to write the chemical formulae if the names of the compounds are given. Such questions we did in question sets also, right? So magnesium chloride. Magnesium chloride, magnesium exists as Mg2 plus, chloride as Cl minus. तो exchange हो जाते हैं charges, ठीक है, Mg वाला Cl पे और Cl वाला Mg पे चला जाएगा, so it becomes MgCl2.
Calcium oxide, it's CaO, right? Copper nitrate, CuNO3 whole twice. Aluminium chloride, AlCl3. Calcium carbonate, CaCO3. तो ये कैसे लिखते हैं, अगर आपको पूरी डिटेल्स में फिर से स्टडी करना है, यू कैन वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट, राइट? अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स रहते हैं तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो ऑन एवरी संडेज. यू कैन पोस्ट अ रिक्वेस्ट फॉर दैट आल्सो, सो आई विल मेक यू जॉइन दैट मीटिंग आल्सो, राइट? Okay, so the fifth question is we have to give the names of the elements which are present in these compounds. Okay, first is quicklime. So quicklime में होता है calcium and oxygen. Second is hydrogen bromide. तो इसमें hydrogen और bromine होता है. Next is baking powder. Baking powder contains sodium, hydrogen, carbon, oxygen. Next is potassium sulfate. It contains potassium, sulfur, and oxygen. Right? So next is the question number 6. We have to calculate the molar mass of the following substances. First is ethyne, that is C2H2. तो कार्बन का आपको एटॉमिक मास पता है, it's 12 units. हाइड्रोजन is 1 unit. तो 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, C के भी और H के भी. तो 2 into 12 plus 2 into 1, it gives 26 units. Right? Then sulfur molecule. Sulfur का atomic mass है 32. 8 atoms are there, so 8 into 32, it gives you 256 units. Next is phosphorus molecule, P4. P4 means 4 into phosphorus का जो atomic mass है, that is 31. So 4 into 31 gives 124 units. Next is HCl. So hydrogen is 1 unit, chlorine is 35.5 units. You add them, it becomes 36.5 units. Next is nitric acid, HNO3. So H is 1 unit, nitrogen is 14 units, and oxygen 3 atoms are there, and each atom has a atomic mass of 16 units. So you add it 1 plus 14 plus 3 into 16, it gives you 63 units in all. So such questions are very common in the exams. Thank you so much for watching the lecture, and if you have any doubts, please post it in the comment section. I'll be glad to help you out, and subscribe my channel Learn with Nisha ji for more updates.